Now my bike has done 14,700 kilometers, so it is the time for the 4th service. So I am going to the service center now. I have reached the service center and have given my bike for service. तो उन्होंने एस्टिमेशन दिया है 142 रुपीज़ का, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 165। उन्होंने बताया कि पुराना जो एयर फिल्टर है उसके ऊपर ज़्यादा कचरा जम गया था, ये नया वाला है एंड इट कॉस्ट अबाउट 165 रुपीज़, सो 165 प्लस 142। लास्ट टाइम में मैंने बैंगलोर में ये सर्विसिंग करवाया था, तभी उन लोगों ने चेंज के में कुछ गड़बड़ कर दिया था। बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट दिस मालूम है लास्ट टाइम ज़्यादा टाइट या लूज हो गया था, अभी तो प्रॉपर है। This is the waiting room and I can see my bike from here. I want to get the अलाइनमेंट डन, व्हील अलाइनमेंट जो मुझे करवाना है, बिकॉज एक जो स्पोक है वो लूज़ हो गया है, सो आई वांट टू गेट इट डन एंड दिस गाइज आर टेलिंग द व्हील अलाइनमेंट कॉस्ट अबाउट 1000 रुपीज़, सो यू गाइज डू लेट मी नो व्हाट will be the costing of wheel alignment, so do comment and tell me. I'm planning to get it done after a few days before I go for any long ride. सब ठीक है। It's going to get washed now. अभी गाड़ी का सर्विसिंग हो गया है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल, कैसे चकाचक बन गई है। सो गाइस, दिस इज़ द बिल 29960, एक्चुअली इट इज़ 158, no it is 141.60. The air filter cost about 158 rupees, but the service cost is only 141.60. The bill total is 299.60. So that's it. So that's it for now guys, and I'll see you in my next video, and do subscribe to this channel, and you guys take care. Bye bye.